Screen is visible? Yes. Yes, sir. Okay. So today's topic is team and role of an agile team. So in that particular topic, we are going to discuss what is Scrum Master, the product owner, the role of that particular product owner in that particular agile team, then a development team. Okay. So, what is an agile team? We have already discussed this in. We have an idea of that. What is agile methodology? How that particular uh, team member work in agile team? What are the different roles and responsibilities of the team member in a agile team? So, a agile team is a group of employees, contractors, or freelancers responsible for executing an agile project. Agile teams are typically co-located and often wholly dedicated to the project during its timeline. So, with no obligation to other projects. So, agile team need every person required to produce the end product or service. The team is typically cross-functional and role will vary depending on the project's need and the type of agile framework which you have chosen for the particular project. Generally, the agile team consists of 5 to 9 personnel which having the experience of 2 to 10 years, and they have the different role, cross functional role. 4 5 developer are there, 1 2 tester are there, one scrum master is there in agile team, and one product owner is there in a agile team. So when using a scrum framework, an agile team should have the scrum master. जब आप scrum framework का use करते हो, at that time there must be a scrum master in your team. There must be a product owner in your team and other required team members. तो जब स्क्रम फ्रेमवर्क हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम स्क्रम स्प्रिंट होता है, डेली मीटिंग होते हैं, एट दैट टाइम यू हैव a scrum master, you have a product owner in your team. So the scrum master, often called that is the project manager, oversees the project, facilitates the collaboration and organize the daily meetings. The product owner is the responsible for ensuring the product meets and the requirement of the customer. Subject matter experts and the other stakeholder may provide input into the project as needed, but they are not typically considered part of agile team. So when you choose the scrum framework, at that time you have the scrum master, that is a project manager of that particular agile team, and the product owner. Abhi product owner, actually the product owner is raise the voice of customer on the behalf of customer. That particular product owner tells the requirement to the agile team. So according to the requirement which has told by the product owner to the team, that particular team is going to develop the project according to the needs or the requirement which has given by that particular product owner. So there is a communication between the end user, means the customer, and the product owner. Customer told the exact requirement to the product owner, and the product owner who is actively contributing in the team, he tells that particular requirement on the behalf of customer to the agile team. Understood? So these two roles are very important. So agile team roles and agile development team has to be everything. It is important to have the right role in the group. The most common agile team roles are team lead. अभी agile team में बहुत सारे रोल होते हैं. अभी team lead कौन करेगा यहाँ पे? कौन बता सकता है मुझे? In a agile team we have already seen in this chapter 3 who is going to lead the team when we choose the agile framework. कौन बता सकता है मुझे? agile team में कौन lead करेगा?
Scrum Master. Very good. The Scrum Master is going to lead that particular team if you are using the Agile method Scrum. So, this role will be the Scrum Master, and the point of the role is facilitate the team. The role of that Scrum Master is to facilitate the team, lead the team. It is responsible for finding the resources for the team, ensuring team member and protected from the office politics and the like, allowing them to get on to the great work. The Agile Alliance define the role like this. The Scrum Master is the team role responsible for the ensuring the team lives agile values and principle and follow the process and the practice that team agreed they would use. So when you use the Scrum framework to develop the project of Agile, at that time you have to follow the principle of Agile. There are actually 12 principles. There is a Agile manifesto. So this is the responsibility of that particular Scrum Master, is that whether the product is developing, what you are going to develop, that particular development follow the Agile manifesto or not, that development follow the Agile manifesto or not. So this is seen by that particular Scrum Master, and that particular role of the particular Scrum Master to provide the facility and to make or to watch on the team whether they are following the Agile manifesto or not. Then we have seen the product owner. So this role as most aligned towards project sponsor on a non agile project. अभी ये प्रोडक्ट ओनर क्या होता है, एक्चुअली दैट प्रोडक्ट ओनर इज अ टीम member of that particular agile team, but this product owner have the strong communication with the end user, that is a project sponsor. So they are the person representing the interest of the client stakeholder. So that particular product owner raise the voice of stakeholder or client or a customer. Then a team member. So in an agile development project, this role would normally be someone in a programming or software development role. So in a agile team we have the different member. One is a scrum master, who is the actually the project manager. Then another is the product owner. He on the behalf of customer or on the behalf of stakeholder, he is going to raise the voice of customer. He get the requirement from the customer and tells that requirement to the team member, means actually who is going to develop the project, actually who is going to code that particular project according to that requirement. So in a team member there are the different member. Some of the members are doing the coding of that particular project, means try to put the requirement into the or try to put the functionalities which has given by that particular product owner, or which has told by that product owner to the different team members. So the team member actually implement that particular functionality, implement the requirement of that particular business into the product or into the software. So there are different team members, some doing the programming, some some are the software development role, some are the some member in this particular team member are the tester, who is actually going to test, he that particular person are actually going to test the software, find out the bugs, and actually going to test the whether that particular team member develop the product according to the acceptance criteria which has been contracted in a planning phase. So according to that acceptance criteria, whether that particular product has been made or not, it has been seen by that particular
team member. So there are different team members, some of the developer or a coder, some of the tester who is who will check the quality of that particular product or software. So it could mean anyone who has something valuable to bring to the team that helps get the deliverables completed. So tester, नेक्स्ट इज टेस्टर. जैसे कि हम डेवलपर होते हैं, दे आर डूइंग द कोडिंग, सो द सेम वे टेस्टर इज carried out or test that particular software, try to find out whether there is the bug in that particular software or not. So software testing is a big part in an agile team. Even in non-software terms, you may want someone who can act as a tester. Then product owner, the single person responsible for that, maximizing the return investment, that is ROI of that particular development efforts. Responsible for the product vision. ये प्रोडक्ट ओनर क्या होता है? ये प्रोडक्ट ओनर इज अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर agile team, but actually he gets the requirement from the end user and tells that requirement to the team member who is going to develop, who is going to test that particular software or product during the iteration. So after the iteration, when you deliver the product to the end user, at that time also end user or a customer give the feedback or give the particular suggestion or uh, change the requirement. So if the requirement is changed, then there is the job of that particular product owner to note that requirement and tell that requirement to the team member. He is responsible for the product vision, constantly reprioritize the product backlog, adjusting any long-term expectation such as SLRless plans. Means he has to prioritize the requirement. अभी वो प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट करने की क्यों ज़रूरत है, कॉन्स्टेंटली प्रायोरिटाइज करने की क्यों ज़रूरत है? बिकॉज व्हाट हैपन व्हेन यू चूज द अजाइल फ्रेमवर्क or when you choose the that scrum framework to develop a particular product by using agile methodology, at that time you give the small module, developing that particular module and deliver that particular module to the customer. So when you deliver that particular module to the customer, at that time it may happen customer may change the requirement. अगर उसकी रिक्वायरमेंट चेंज होती है उस वक्त, तो उसको प्रोडक्ट ओनर को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है रिक्वायरमेंट कि कौन सी रिक्वायरमेंट इम्पोर्टेंट है, कौन सी रिक्वायरमेंट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. सो ही हैज़ टू डिटरमाइन हाउ मच efforts is required for each and every requirement. He has to categorize the requirement according to the efforts. जैसे कि हमने कल देखा कौन से रिक्वायरमेंट को या कौन से यूज़र स्टोरी को कितना एफर्ट्स लगता है, और कौन सा यूज़र रिक्वायरमेंट या यूज़र स्टोरी which is very important from the customer point of view. So that's the job of that particular product owner to constantly reprioritize the product backlog, adjusting the long-term expectations such as SLS plans. Final arbiter of requirement questions, accept or reject each product increment, decide whether to ship, decide whether to continue development, consider stakeholder interest, may contribute as a team member and has a leadership role. अभी as contribute as a team member means what? जो प्रोडक्ट ओनर होता है वो टीम मेंबर का ही हिस्सा होता है. एम आई राइट? Yes, sir. सो वो क्या करता है, वो कस्टमर से
प्रायोरिटाइज करता है रिक्वायरमेंट, कस्टमर से रिक्वायरमेंट समझ के लेता है उस प्रोडक्ट में क्या करना है क्या नहीं, उसकी फंक्शनलिटी क्या होनी चाहिए क्या नहीं, वो एक्चुअली स्टेक होल्डर के साथ बात करके उसके रिक्वायरमेंट लेता है और वो रिक्वायरमेंट अपने टीम को देता है, एंड देन दैट पर्टिकुलर टीम इज गोइंग टू डेवलप द particular project according to the requirement which has given by the product owner. So he is considering the interest of stakeholder and has a leadership role. Also, that particular product owner leads that particular team by giving the suggestion, by giving the requirement, by suggesting to the team member what customer exactly want, what is the exactly requirement of the stakeholder or a customer. So this is about the product owner. Then Scrum Master is a core of that particular Scrum team, doing the Scrum planning for the particular Scrum sprint, then manage the dependencies and implements, is a part of Scrum team, not a manager that is responsible from Scrum like a daily stand-up meeting, demo, retrospective, uh, then Scrum development team. Scrum team works towards the achieving goal of the sprint. Sprint means nothing. It is like a requirement. So what is that particular sprint? They work on the Scrum backlog items and take a part in a Scrum ceremonies. अभी स्क्रम बैकलॉग में क्या क्या है, कौन से आइटम बाकी है डेवलप करने के लिए. सो they work on that particular scrum back items and take a part in a scrum ceremonies. So scrum team take a part in a daily stand up and discuss three things. अब इस जो स्क्रम टीम होती है वो डेली उनका मीटिंग होता है. सो दे आस्क द क्वेश्चन व्हाट वाज डन यस्टरडे, हमने कल क्या किया, व्हाट इज़ द प्लान फॉर द टुडे, हमें आज क्या करना है, एंड एनी इम्पेडिमेंट्स. So this particular discussion is carried out in the Scrum team, Scrum development team. So there are several key differences between the agile approach to the team organization and the traditional approach. अभी हमें ये देखना है कि जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था, जैसे कि व्हेन वी आर डेवलपिंग एनी प्रोडक्ट बाय यूजिंग द वाटरफॉल मॉडल. So, what is the difference of team organization in a traditional approach, or you can say the traditional method, and a agile team method, or agile development, or an agile approach? So, agile team or whole team. अभी क्या डिफरेंस है, जैसे कि ट्रेडिशनल टीम होती है या अजाइल टीम होती है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अजाइल टीम एंड द ट्रेडिशनल टीम, ऑर्गेनाइजेशन में उनका डिफरेंस क्या है. कौन बता सकता है टीम का डिफरेंस क्या हो सकता है. यस, कौन बता सकता है. So there are several key differences between the agile approach and the team organizing. Between the traditional means there is a difference between the traditional approach and the agile team approach. So agile team as a whole team, अभी agile team क्या होती है, whole team होती है. So whole team is an extreme programming practice that advise you to have sufficient skill within the team itself to get the job done. सो जैसे कि हमने देखा है कि अजाइल टीम में एक्सपीरियंस बंदे होते हैं जिनका एवरेज एक्सपीरियंस होता है 2 to 10 years. सो दे हैव द एक्सपीरियंस. दे whole team is an extreme programming practice and they advise you to have sufficient skill within the team itself to get the job done. And the implication is that the development team has the requisite testing skill, database skill,
user interface skill, and so on, and does not rely on the external experts or the team of experts for this sort of things. मीन्स हमने देखा है कि अजाइल टीम में सब जो बंदे होते हैं उनका एवरेज एक्सपीरियंस 2 to 10 years होता है. सो दे हैव एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग, hands on experience in a testing, planning, then UML diagram, the flow of that particular business, how that flow is you are going to organize or manage in that particular product. So they know all these particular things. So they don't require the experts or a third party to have the suggestion or a team of experts for this sort of things. Understood? So agile team is a whole team. Agile team are form that is mostly of the generalized specialist. Generalizing specialist, something called as a craft person, is some who has one or more technical specialties, that is Java programming, project management, database administration. जैसे कि जो एक बंदा होता है उसको बहुत सारे काम आता है. मीन्स ही इज़ वर्किंग ऑन पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम ऑल्सो. ही may have the knowledge of project management, he may have the knowledge of database administration, so that they can contribute something of direct value to the team and has at least the general knowledge of software development and the business domain in which they are working. So they most importantly actively seek the gain new skills in the both their existing specialties as well as in other areas, so including both technical and the domain area. uh, सो जो अजाइल टीम में जो काम करते हैं वो मीन्स दे कैन वर्क ऑन एनीथिंग. मीन्स आपने अगर बोला उस अजाइल टीम में जो बंदा काम कर रहा है उसको बोला भाई आज तुझे कोडिंग नहीं करनी है, आज तुझे टेस्टिंग करना है, या इफ उसको प्रोग्रामिंग से हटा के अगर टेस्टिंग में आपने डाला तो टेस्टिंग भी कर सकता है, बिकॉज दे हैव द that particular knowledge, they have the experience and they work on that particular business domain. So novice IT professional and traditional IT professional who are the often specialized in just one area. और जैसे कि आपने हमने ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन देखा है या ट्रेडिशनल जो टीम होती है उसमें स्पेशलाइज एरिया होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रोजेक्ट चल रहा है डॉट नेट में, तो दैट पर्टिकुलर ट्रेडिशनल टीम रिक्रूट ओनली द पीपल हु हैव द नॉलेज ऑफ डॉट नेट, है क्या नहीं. ऐसा नहीं होता कि उनको सारा नॉलेज नहीं होता है, उनको होता है वो नॉलेज, बट इतना डीप नहीं होता है. जैसे कि आजाइल टीम में पर्सन होते हैं जो आपके एम्प्लॉय होते हैं या जो टीम मेंबर होते हैं उनका एक्सपीरियंस होता है 2 to 10 years. सो दे वर्क ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, सो दे आर मास्टर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. सो ट्रेडिशनल में क्या होता है, if you want a special person who is working on the .NET or Java, you recruit that particular person only. He not have expertise in other things or in other technical area. So we'll need to work towards these goals, and generalizing specialists are the sweet spot between the two extremes of specialists, people who know a lot about narrow domain and generalists who know a little about the wide range of topics. देन थर्ड, agile टीम स्टेबल होती है. तो agilists understand that changing team structure, this iteration, Sally is a part of team, but next iteration she is pulled off to help another team. So is detrimental to project success. We strive to keep our team as stable as possible, a goal that is much easier to achieve if people are generalizing specialist. अभी अजाइल टीम स्टेबल हमें क्यों रखनी है, क्योंकि बार बार हम क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा मॉड्यूल डेवलप करके हम क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, है क्या नहीं. एम आई राइट. अजाइल टीम को Yes. हाँ स्टेबल क्यों रखना है अजाइल टीम को, कौन बताएगा मुझे. गलत होगा तभी चलेगा, कोई बात नहीं.
जो हमारे टीम मेंबर होते हैं या जो टीम होती है उनको ही रखना है, ज़्यादा चेंज नहीं करना है टीम में, ऐसा क्यों? बताइए। तो कितना बात हुआ है हमारा अजाइल टीम के ऊपर, कौन बताएगा? फिजा, अश्विनी? गलत हो गए तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। सर अजाइल में इटरेशन है तो पहले जो टीम उस पे काम कर चुकी है उनको उसके गोल्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर वही टीम कंसिस्टेंट रही तो इट विल बी इजी टू अचीव गोल। वेरी गुड। So in agile we are develop a product by increment, we are develop that particular product by module wise. Means first, if you have the software to develop, we uh, divide that software into small small part। उस छोटे छोटे पुर्जे, छोटे छोटे पार्ट हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। वो छोटा टुकड़ा या छोटा मॉड्यूल डेवलप होने के बाद हम क्या करते हैं, वो कस्टमर को डिलीवर करते हैं और उसको बोलते हैं आप उसको जो फंक्शनलिटी हमने अभी इसमें सॉफ्टवेयर में या प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट की है आप चेक करो, है क्या नहीं, फर्स्ट इटरेशन में, और कुछ सजेशन हो तो हमें बताओ। तो ऐसा क्या होता है, हम इटरेशन में काम करते हैं, अगर उसकी रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो वापस उसको हम डेवलप करते हैं। तो इटरेशन में काम करते वक्त अगर आपकी टीम स्टेबल होंगी तो आपके टीम मेंबर को सब पता होगा शुरू से क्या हुआ है, रिक्वायरमेंट कैसे कैसे चेंज हुए हैं और व्हाट इज़ अवर गोल। सो अजाइल टीम स्टेबल ही होनी चाहिए। Then small agile team, so there are several roles which have the different names depending on the methodology being followed. So common agile team role are not a position, are given person take on more or more roles and can switch roles over the time, and they are given roles may have zero or more people in it at any given point in a project. The common agile roles are team lead। अभी जो अजाइल टीम होती है वो छोटी होती है और वो 4 5 या 8 9 लोग हो सकते हैं, तो उनमें बहुत सारे रोल उनको अदा करने पड़ते हैं, जैसे कि टीम लीड है, सो दिस रोल कॉल्ड एज स्क्रम मास्टर in scrum, or a team coach or a project lead in the other method is responsible for facilitating the team, obtaining the resource for it and protecting it from the problem. So this role encompasses the soft skill of the project management, but not the technical ones such as the planning and scheduling. So activities which are better left to the team as a whole, more on his latter. Then team member, so this role sometimes referred to a developer or a programmer is responsible for the creation or a delivery of a system. So this include modeling, programming, testing, release activities as other activities। जैसे कि स्क्रम मास्टर क्या काम करता है, फैसिलेट का काम करता है। देन प्रोडक्ट ओनर, द प्रोडक्ट ओनर कॉल्ड ऑन साइट कस्टमर। जैसे कि ऑन साइट कस्टमर मीन्स व्हाट, प्रोडक्ट ओनर क्या क्या होता है, टीम का ही, अजाइल टीम का ही एक पार्ट है, बट ही रेज द वॉइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कस्टमर। सो active stakeholder in AM and represent the stakeholder, this is the one person responsible on a team, on a sub team or a large product, who is responsible for the prioritize that particular requirement। Understood?
Then stakeholder, that particular stakeholder is anyone who is a direct user, indirect user, manager of that particular user, senior manager, operations staff member, the gold owner who funds the project, support helpless staff member, auditors, your program portfolio manager, developers working on the other system that integrate or interact with one under development, or the maintenance professional potentially affected. तो स्टेक होल्डर क्या होता है, जैसे कि जो एंड यूज़र होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज़र होता है, मैनेजर होता है, सीनियर मैनेजर हो सकता है, ऑपरेशन स्टाफ हो सकता है उस प्रोडक्ट का, ठीक है. So by the development and or deployment of that particular software project. So the structure of small agile team, what you typically read about in the agile literature is how a team developers led by the team lead works closely with the product owner to build a high quality working system on an incremental basis. So what you don't hear about as often is what I call the supporting cast. अभी agile टीम में सपोर्टिंग कास्ट होते हैं, जैसे कि टेक्निकल एक्सपर्ट. So sometimes the team needs the help of technical experts such as a build master to set up their build script, or an agile database administration to help design and test their database. जैसे कि कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट भी चाहिए आपके टीम में, जो आपके बिल्ड होते हैं छोटे छोटे, उसको बिल्ड करे या कन्फ्यूगर करे दूसरे लोगों लोगों का जो प्रोडक्ट है या लोगों का जो बिल्ड है. जैसे कि आप टीम में काम करते हैं तो आप एक ही कंप्यूटर के ऊपर 4-5 लोग बैठ के वो सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं होता है. कुछ लोग अलग अलग फंक्शन के ऊपर डेवलपमेंट होती है, कोडिंग होती है, तो 4-5 लोगों का क्या करना पड़ता है, आपको कोडिंग ये करना पड़ता है, कन्फ्यूगर करना पड़ता है क्या नहीं, वो कन्फ्यूगर करना पड़ता है, डेटाबेस बनाना पड़ता है. सो you must require that particular technical expert who will configure all the particular small module and have that particular project, have the knowledge of particular database administrator so that he can manage the database and design test their database. So technical experts are brought in one as an needed temporary basis, or to help the team overcome a difficult problem and transfer their skill to one or more developers on the team. जो टेक्निकल एक्सपर्ट का काम क्या है टीम में, या टेक्निकल एक्सपर्ट होना क्यों जरूरी है, कि जैसे कुछ कुछ प्रॉब्लम आते हैं, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू सॉर्ट आउट. सो एट दैट टाइम व्हेन वी हैव द टेक्निकल एक्सपर्ट, that particular technical expert can sort out the particular problem. So that particular technical experts may be on a temporary basis, or that particular agile team may have the technical expert staff who can uh, give the expertise on that particular technical issue. Then domain experts, your team must have the person who have the knowledge of particular business. If you want to, if you are going to develop a project in a particular business, at that time there must be a member in your team, they have the knowledge of that particular business domain. Means that is a domain experts. As you can see, the product owner represent a wide range of stakeholder, but just the user, and in the practice it isn't responsible to expect them to be experts at every single nuisance in your domain. As a result, the product owner will something bring in domain expert to work with the team. जैसे कि जो प्रोडक्ट ओनर होता है, ही हैज़ द knowledge of particular business flow, how a particular things moves in that particular business, and according to that domain expertise, according to the knowledge which have that particular product owner, uh,
जैसे कि प्रोडक्ट ओनर है आपके टीम में, उसको उस डोमेन का एक्सपर्ट होता है व्हेन ही इज गोइंग टू द एंड यूजर और स्टेक होल्डर, एंड व्हेन द एंड यूजर और द स्टेक होल्डर ट्राई टू give the requirement to that particular product owner. At that time product owner is in a position to get the exact requirement, what he want to express, what he want to put in the particular software or that particular product. So वो डोमेन नॉलेज उसके पास होता है, वो डोमेन उस बिजनेस का फ्लो क्या है, कहाँ से क्या जाता है, वो उसको नॉलेज होता है, तो वो अच्छी तरीके से उस सॉफ्टवेयर क्या करना है या प्रोडक्ट क्या बनाना है वो समझ सकता है. So in your team you must have the person who have the domain expert in a particular business, so that you are going to develop a product or software in that particular business domain. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू solve the particular problem of that particular tax, at that time if you have a tax expert, then he will explain the details of the requirement, or the sponsoring executive to explain the vision for that particular project. Then independent tester, that effective agile team often have an independent test team working in the parallel that validate their work throughout the life cycle. So these are an optimal role typically adopted only on very complex project. जैसे कि टेस्टर, इंडिपेंडेंट टेस्टर हमारे टीम में, अजाइल टीम में होना ज़रूरी है जब हमारा जो प्रोडक्ट होता है, या व्हेन वी आर गोइंग टू डेवलप अ लार्ज प्रोडक्ट. If we are going to develop a large software, at that time we must require the independent tester when you choose the scrum framework to develop a software. तो आपके टीम में इंडिपेंडेंट टेस्टर होना चाहिए. सो ही इज गोइंग टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, ही इज going to find out the bugs in your software or the particular product, and he is the responsible person. He uh, know what quality should accept by the customer, or what quality will be developed by our team, so that customer will satisfy, and that customer will satisfy according to each and every requirement implemented in that particular product or a software. So if you see the team, this is the team lead or आपको दिखाई दे रही फिगर? यस. Yes. सो ये होता है टीम लीडर, दैट इज टीम लीड. अभी ये क्या होगा? टीम लीडर मीन्स अजाइल में इसको क्या बोलेंगे हम? स्क्रम मास्टर, एम आई राइट? जो टीम को लीड करता है अजाइल के, या आर्किटेक्चर ओनर, एम आई राइट? दिस इज टीम मेंबर, देन प्रोडक्ट ओनर, देन प्रोडक्ट. देन सपोर्टिंग स्टाफ होता है जो टीम को, जैसे कि होते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया तो वो सॉल्व करता है टेक्निकल एक्सपर्ट्स. देन डोमेन एक्सपर्ट, बिजनेस का डोमेन एक्सपर्ट जिसको नॉलेज है ज़्यादा, कहाँ से कहाँ हो जा रहा है. जैसे कि कुछ बिजनेस में या कुछ प्रोडक्ट में आपको टैक्स का काम करना पड़ता है, तो उस टैक्स कैसे डिडक्ट करना है, कैसे मैनेज करना है, वो आपको सॉफ्टवेयर में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, या कैसा फ्लोर होता है, ये आपको सब रूल्स रेगुलेशन इसे पता होते हैं, जैसे डोमेन एक्सपर्ट्स. देन इंडिपेंडेंट टेस्टर, जो बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो आपको इंडिपेंडेंट टेस्टर लगता है बग्स निकालने के लिए या टेस्ट करने के लिए. these are the supporting cast of your agile team. ये आपके टीम में होते नहीं, बट आप उनको रिक्रूट कर सकते हैं इफ यू हैव द लार्ज प्रोजेक्ट इन योर हैंड, एंड व्हेन यू चूज द agile scrum framework to develop that particular software. अंडरस्टूड? समझता है?
It's very easy. Yes, sir. टेक्निकल एक्सपर्ट, डोमेन एक्सपर्ट, इंडिपेंडेंट टेस्टर, ये होते हैं सपोर्टिंग कास्ट। ये हो गई छोटी छोटी टीम। देन लार्ज अजाइल टीम, हम देखेंगे लार्ज अजाइल टीम क्या होती है। सो अभी अजाइल टीम की साइज कितनी होती है? छोटी अजाइल टीम की साइज कितनी होती है, कौन बताएगा? अजाइल टीम में कितने मेंबर होते हैं? छोटे जो अजाइल टीम होती है, कौन बताएगा? 5 to 9. हाँ, 5 to 9 होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, 5 to 9, 2 to 9 हो सकते हैं, 3 to 9 हो सकते हैं, 5 to 10 हो सकते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 8-10 लोग हो सकते हैं। It exactly 5 to 9. So when the size of an agile team gets around the 20 or more, you discover that you need to divide the conquer and take a team of team. अगर बड़ी टीम हो जाती है आपकी, 20-25 लोग हो जाते हैं, तो आपको उसमें टीम डिवाइड करनी पड़ती है, कॉन्कर करनी पड़ती है। So it is a team of teams approach. The typically strategy is to organize your larger team into a collection of smaller teams, and the most effective way to do so is around the architecture of your system. Each subsystem should be responsible for one or more subsystem. जैसे कि आपकी बड़ी टीम होती है 20-25 लोगों की, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो सिस्टम है उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसको मॉड्यूल में डिवाइड कर सकते हैं या सब सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर आर्किटेक्चर यू कैन अलोकेट अ सब सिस्टम टू वन वन टीम। जैसे कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके आप दो मॉड्यूल बनाओगे या दो सिस्टम बनाओगे, एक सब सिस्टम आर्किटेक्चर के हिसाब से एक सिस्टम एक टीम को देंगे, दूसरी सिस्टम दूसरी सब सिस्टम दूसरी टीम को देंगे। समझते हैं? करते हैं क्या? यस। Yes, sir. So each subsystem should be responsible for one or more subsystem and enabling them to work as a small agile team and responsible for delivering working software on a timely basis. So this strategy is often referred to as a Conway's law after Malvin Conway, who introduced in the late 1960s and is one of the several lean development governance strategies. जो मार्विन कॉनवे था, वो एक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी उसने गवर्न की थी उस 1960 में, उसने ये हमको बताया था। सो एडिशनल ऑफ दैट पर्टिकुलर रोल ऑफ अजाइल टीम एट स्केल इंक्लूड आर्किटेक्चर ओनर। अभी इसमें इस टीम के अलावा भी कुछ एडिशनल होते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर ओनर। सो दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर facilitating the architectural decision on a sub team and is a part of architecture owner team which is responsible for overall architecture direction of the particular project. So the architecture owner leads their sub team through initial architecture envisioning for their subsystem and will be involved with the initial architecture envisioning. अभी आर्किटेक्चर ओनर का क्या काम होता है? जैसे कि आपकी बहुत बड़ी टीम है 20-25 लोगों की, और एक प्रोडक्ट आपको डिज़ाइन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट को डिवाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर आर्किटेक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। उस प्रोडक्ट को हम जब दो हिस्से में, दो पुर्जों में डिवाइड करते हैं, तब उसका अलग अलग आर्किटेक्चर हो जाएगा, है क्या नहीं? तो उस जो मेन सॉफ्टवेयर या जो मेन प्रोडक्ट का आर्किटेक्चर है, उस हिसाब से आपको टीम डेवलप करनी पड़ेगी एंड उस हिसाब से आपको डेवलपमेंट चालू करनी पड़ेगी, सो दैट इट विल वेरी इजी to configure two subsystem into the one large system or into one large product. So that is the role of that particular architecture owner, to have
or to lead the subsystem through the initial architecture. Understood? So he may give an idea how the architecture of that particular product, how the design of that particular subsystem is there, and how when you develop the particular subsystem, how you are going to configure the two subsystem by using your architecture or by using your design. So he is responsible, that architecture owner leads their subsystem through the initial architecture envisioning for their subsystem and will be involved with the initial architecture envisioning for the system as a whole. So architecture owner are different than traditional architects in that they are not solely responsible for setting the architectural direction, but instead facilitate its creation and evolution. वो कैसे बनाना है और उसका इवोल्यूशन कैसे हो जाएगा, ये वो फैसिलिटेट करता है. Then integrator, the subsystem are typically responsible for one or more some subsystem, and the larger the overall team, generally the larger or more complicated the system being built. So in this situation, the overall team may require one or more people in the role of integrator who are responsible for building the entire system for its various subsystem. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम छोटे छोटे मॉड्यूल में या छोटे छोटे सब सिस्टम में हमने टीम को डिवाइड किया है और उनको छोटा छोटा सब सिस्टम डेवलप करने के लिए दिया है. तो हमारे टीम में इंटीग्रेटर भी चाहिए कि वो क्या करें, सब सिस्टम को कलेक्ट करें एंड ट्राई टू इंटीग्रेट दैट पर्टिकुलर सब सिस्टम सो दैट इट हैव द होल सिस्टम और होल प्रोडक्ट. So the person who will want to perform system integration testing regularly throughout the particular project. Then role in an agile team. An architecture owner हमारा होगा. So this is about the team and the team member. So I think today we will stop here. Tomorrow we will see the next point. Okay. रुकना है नहीं हमें आज. Yes. Yes, sir. Yes, Today sir. we will stop Yes, here sir. and tomorrow we will meet at same time. So have a nice day. शायद मैंने कल की अटेंडेंस नहीं भेजी ना आपको, या भेजी थी? नहीं सर. तो मैं आज दोनों अटेंडेंस भेजता हूँ, कल की और आज की, एक थोड़ा 2 बजे के बाद. तो वो मार्क कीजिए आपका अटेंडेंस, ठीक है? ओके. Okay, sir. Thank you. ओके, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.